we are moving ahead and learning the branding aspects of it. Coming to branding, now firstly, what is branding? Branding is something which will allow you to make your customers experience the brand through those materials or through those objects. Okay, now what are these objects? These objects will be something which will give an experience to your customers or your audience, which will associate them with your brand. Okay, उनको आपके ब्रांड के साथ एक कनेक्शन मिलेगा, समथिंग सो दैट यू नो दे विल connect through them, and they will have a very good bonding with your thing, because you are giving them an experience of the brand through all these materials. Now what are these materials? These materials can be, first is आपका business card हो सकता है, correct? Then secondly, it can be, just a minute, huh? Secondly, it can be your letterheads, because it is going to go to a person with your identity on it. Okay, all of these are going to pass on your identity to your audience, or to your the people whom you want to reach out. Thirdly, that can be a envelope, because whatever you will be wrapping up your thing into, or giving it to someone, all of this will be concealed in the envelope, and that will be the first identity that will reach your audience. So suppose if you're giving an invoice, so the invoice will be wrapped in the envelope, and then it will be delivered to your customers or given over to your customers. For example, you are sending over some letterhead to another office, so that again will be wrapped up in the envelope, and then it is going to be delivered. So that identity, so whenever it is received, the customers will first connect to the brand. Okay, this brand has sent it over to me, and then experience whatever is written inside, or whatever the content is inside. The fourth can be and email signature. अभी ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, जो आप लोगों ने बहुत बार ईमेल्स के नीचे you read the signing of person, so we write regards by whoever it is sent, and the designation of the person. Now this only is professionally designed for many of the companies. So that design consists of आपका name, the designation, and the कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे फ़ोन नंबर, फिर आपका ईमेल आईडी आ सकता है, वेबसाइट आ सकता है, आपके सोशल मीडिया लिंक्स आ सकते हैं. ओके, देन फिफ्थ कैन बी, now these first four you can say are mandatory. कोई भी बिजनेस हो, ये चार चीजें आती ही है, no matter what. These are like the basic requirements of any kind of business. Moving on further, what else can be a brand experience, which we call, can be a carry away bag, so maybe a paper bag or any kind of baggage. Then you can also design mugs as a gifting object. Now all these bags, mugs, maybe bookmarks, these are giveaway type kind of objects, you can say. Okay, ID cards. Now ID cards, we are not going to sell, or we are not going to showcase a product on ID cards, but for example, a person comes from Tata Motors to you for your car's servicing.
So by the ID card, by his uniform भी एक आता है. By his uniform and ID card, you identify that person as a representative from Tata Motors. तो उसका logo will be imbibed. The uniform which that person is wearing will identify you from the others. Then जैसे बहुत सारे travel agencies होते हैं, तो केसरी का आपने बहुत बार देखा होगा. They give you this baggage, the luggage carrier. So suitcases हो सकते हैं, छोटे packages हो सकते हैं बैग के, या तो फिर ऐसे टी शर्ट्स होते हैं, उनके कैप्स होते हैं. सो देर आर मेनी आइटम्स विच कैन कम इनटू ब्रांडिंग. ओके, बट डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस की क्या है, मतलब आप क्या सर्विस या फिर क्या प्रोडक्ट का सर्विस मतलब बिजनेस करते हो. सो अगर फूड रिलेटेड हो तो यू कैन गिव टी शर्ट्स, यू कैन हैव something like straws or maybe paper napkins, or branding can come over the space which it is acquiring. So all of this will come into branding aspects. Now the technical parts of it. So firstly, आपका जो business card है वो आप size होगी हमेशा 85 mm into 55 mm, or you can say 8.5 centimeters into 5.5 centimeters. And this will be preferably a thick sheet of paper on it will be always printed on a thicker sheet. So you can say around 300 to 350 GSM. GSM is the what do you say, quality of paper. You measure it in GSM. So you can say around 300 to 350 या फिर उससे ज़्यादा GSM of paper quality. Okay. Next is letterheads, which will be always A4 size, A4 in their size. And both of these mediums, rather three of these mediums, are going to be in CMYK. Cyan magenta, क्योंकि this is all going to be printed. Okay. डिजिटली भी दे सकते हो, बट द थिंग इज मोस्टली प्रिंट भी करवाते हैं, तो ऑलवेज डिज़ाइन इट इन CMYK. अगर यूज़ हो रहा है ओवर द इंटरनेट, दैट वोंट बी एन इशू, बट अगर RGP में आप क्रिएट करोगे एंड देन इफ यू प्रिंटेड, गड़बड़ होने के चांसेस है व्हेन इट कम्स टू प्रिंटिंग. ओके. Envelope is anything which fits into the size of A4, nothing more than A4. क्योंकि अभी वो फोल्ड्स अलग अलग होंगे तो डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं. लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोल्ड्स ऑफ एन ऑफिशियल envelope, so depending upon it, but it should not be less than A5 and more than A4. okay, मतलब जो पैकेज साइज होगी वो आपका जो envelope बनेगा वो विद इन A4 साइज में होना चाहिए. ओके. अभी कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज योर emailer. Okay, email, it's called an email signature. So if you see this is called a email signature, which is attached at the end of your email. So जो भी आपको कोई official email भेज रहा है, that person's name, his designation and उसके थोड़े details जो भी होंगे वो आएंगे. So it's always in this way which it will be designed. तो थोड़ा डिपेंडिंग एंड ऑफ कोर्स द लोगो ऑफ द कंपनी, वो सब भी आएगा. ओके. इसका भी साइज नोट डाउन करो. इट विल बी width will be 700 pixels into 300 pixels in height. This is the height and this is the width. इधर लिख रही हूँ मैं width. This is the maximum size you can say. So understood the technical aspects of this. ये RG में आपको करना पड़ेगा because this is a email signature. The rest of the objects can differ in size. अभी bags होंगे तो वो एक छोटे size की bag
हो सकती है, like around even 5 centimeters or something like that, till maybe 20 centimeters or maybe more than that. So it depends कि आपका प्रोडक्ट का साइज क्या, आप उसमें क्या देना चाहते हो, and it will depend upon that. Same goes for the mug. मग की डिजाइन क्या है, छोटा है साइज या मीडियम है साइज, या कैसे आएगा, कौन से मटेरियल में आएगा. Bookmarks again are of little differentiating sizes. So it depends. Abhi all these of the objects will depend कि कैसे आएगा. I cards again will come approximately आपके जो business card की size है 85 by 55 mm, उसमें ही आते हैं usually, unless they are मतलब कुछ अलग से डिजाइन होगा उसमें, otherwise it will be 85 by 55 mm. Uniform will be again depending upon क्या यूनिफॉर्म है, उसका क्या स्टाइल है, वो इसमें आएगा. कैप्स का अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टाइल कि किस टाइप का कैप है. नाउ फर्स्टली हमने क्या लिया था, बिजनेस कार्ड. यूजुअली लैंडस्केप में ही डिज़ाइन होते हैं आपके विजिटिंग कार्ड्स. दे कैन बी अ सिंगल, मतलब सिर्फ फ्रंट भी हो सकता है या फिर डबल साइडेड प्रिंट भी हो सकती है, लाइक फ्रंट एंड बैक. ओके, सो फ्रंट एंड बैक प्रिंट हो सकता है, मतलब आगे आपका डिजाइनिंग विद द लोगो, आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग, एंड बिहाइंड आपके सारे डिटेल्स, या तो फिर सिंगल इस पे भी प्रिंट होता है. डिपेंड्स कि हाउ डज योर कस्टमर वांट इट. ओके, अब इसमें डिटेल्स क्या क्या आएंगे. सो डिटेल्स में आएगा like what has to be mentioned. Okay, first is the name of the person whose business card it will be. Okay, the employer's name. Okay, secondly the designation, मतलब वो क्या है, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, what job role does he serve in that particular company. Then his or her email address, all these are contact details. phone number. Okay, then आएगा आपका physical address with the pin code and everything. Okay, sorry, physical address. Then the website, कि कंपनी की वेबसाइट कहाँ पे है, मतलब where it will be found. And another thing would be of course your logo तो आने ही वाला है, which is a must. ओके, तो ये सारी डिटेल्स आएंगे आपके बिजनेस कार्ड में. नाउ हाउ विल यू डिजाइन योर बिजनेस कार्ड. फॉर एग्जाम्पल that this is your business card's front side. And this is the back side. आपको याद है वी हैड लर्नड layout designing, उसमें we had to follow certain kind of rules and everything. There was something called as hierarchy. Okay, now hierarchy would be कि आप इस information को, all of this information, name, designation, email ID, phone number, physical address, website, logo, ये सब information को कौन से order में दिखाते हो या लोगों के पास लोगों तक पहुंचाते हो. Okay, so firstly on the front side
maybe we'll have a logo, some kind of design element over it, uh, balancing out things, and a proper layout to our logo. So this will be the logo. Now you can design it in different styles as per your choice and as per your brand guidelines, with the colors and the क्या बोलते हो आपके visual elements which you have made in your brand guidelines. With the help of all of those, you can design the front of your business card. अभी पीछे क्या आएगा? Name, designation, email, all of this information. So are you going to put all of this information in the same kind of hierarchy? So for example, यहाँ पे name आया, यहाँ पे designation आया, यहाँ पे phone number आया. It doesn't work out in that way. Okay, you will have to give it some kind of hierarchy. So for example, let's just continue this visual element over here. I'm just giving an example. Okay, so first will be the name of the person. So name of the person, maybe I want to highlight it very well, like very prominently. Okay, then you can give the designation within this space. Okay, यहाँ पे फोन नंबर आ सकता है आपका. And the rest of the details over here. So now this has got a hierarchy. Uska name, designation, all of the details have come in. अगर आपको सिर्फ फ्रंट साइड का मतलब वन साइडेड बिजनेस कार्ड बनाना है, then what you can do is, for example, this is our logo placed over here. You can always add in the name of the person. अब ये जो भी आप fonts और everything use करोगे, remember those are going to be your according to your brand guideline. Whichever fonts you have specified, whichever colors you have specified, make sure you follow those brand guidelines, which will help you to take good design decisions also, and it will compile to be like a one whole branding thing. Okay, then maybe the designation, फिर आपका address, phone number, website details over here, social media handles कुछ होंगे तो that you can mention. So see to it that it has a good breathing space around it. पूरा जो भी आपका information है बहुत fill up मत करो. Keep a good amount of breathing space or negative space, whatever you would like to call it. See to it कि आपका जो logo आप प्लेस कर रहे हो, इट हैज गुड अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर इट टू स्टैंड अप ऑन इट्स ओन. जैसे वी हैड स्टडीड की ब्रांड गाइडलाइन में वी शुड लीव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस अराउंड द लोगो फॉर इट टू हैव इट्स ओन place in the design. You have to follow that rule over here. Then how you can bifurcate the information, जैसे name, designation एक साथ. So this will be like one unit. Then बाकी के contact details will be another unit, and आपके website handles will be the third unit. So like that you can bifurcate your information and put them into groups. अब ये groups क्यों जरूरी होते हैं? It helps you visually to sort out information. अगर आप सब information एक साथ देने वाले हो, something like this list, अगर एक के नीचे एक सेम फॉन्ट में लिखोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सामने वाला पर्सन टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब, like it will be like bombarding of information which we do not want to do. Okay, we are going to simplify the information and give it to our audience. So it is sorted. So abhi ye bhi, agar if you want to write phone number, see to it you try to use icons instead of writing it directly as phone numbers. तो एक छोटा सा फोन का आप आइकन बना सकते हो. अगर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम हैंडल्स है तो आप make sure that you can make the icons of Instagram and Facebook or LinkedIn or any of the social media platforms कि आप उसको use करो
in uniformity with your other components in the design. Okay, so this was about business card. Now letterhead is an official document which goes across many platforms. Okay, तो जो अगर आपको कुछ official bond sign करना है between two companies, you're going to use your letterhead. If you're going to send some official letter to maybe in our case we'll say if we take design media as an example, to students, to the employees of design media, to the कंपनीज वी आर एसोसिएटिंग विद, तो इन सब के लिए एक अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाना है तो दैट इज कॉल्ड दी लेटर हेड. अगर कुछ दूसरे शॉप्स या फिर ये होंगे तो वेयर विल दे यूज द लेटर हेड टू सेंड अक्रॉस यू नो देयर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो या तो फिर कुछ नॉट न्यू प्रोडक्ट्स एज सच बट सम इंफॉर्मेशन विच हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल एंड विच नीड्स टू बी sent out professionally. So letterhead will be used then. Okay, nowadays it is of course used digitally mostly because of the COVID situation, but any which ways we have to design it क्योंकि वो print होकर it's like a hard copy which is kept for records also, most of the records. So firstly letterhead का size as we specified is going to be A4. A4 और हमेशा वो इसी फॉर्मेट में होगा. लैंडस्केप कभी नहीं बनाना, ऑलवेज इट विल बी इन पोर्ट्रेट फॉर्मेट. ओके, इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या आएगी? फर्स्टली द लोगो ऑफ द कंपनी, देन आएगा आपका इसमें ना लेटर हेड्स आर नॉट सेंट पर्सनली बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, तो इसमें नेम और डेजिग्नेशन दोनों नहीं आएगा. ओके, this is like an official document sent on behalf of the whole company. Okay, but the undersigning can be done by the person who is sending it or whatever, wo ho sakta hai, the undersigned person whoever is sending it, but officially we do not quote it to one particular person. It is sent on behalf of the whole company. तो यहाँ पे नेम डेजिग्नेशन हम लोग ओमिट करेंगे. देन अभी इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका आएगा फोन नंबर, the phone number of the company, not the individual person. Then आएगा आपका अगर physical address देना है आपको तो that address will come. Then आएगा आपका website, web address, and an email ID where the person can contact. So ये हमेशा ऐसे होते हैं. So support@, whichever company, or maybe inquiry @ whichever company. So these are like a generic email IDs which are on behalf of the whole company. ऐसे एक particular person की email ID नहीं आएगी यहाँ पे. Then what did I say? Email ID. So only this much of information, and additionally if you have then social media accounts, like follow us on so and so. That's it. इससे ज़्यादा information नहीं आएगी. Now how will you design a letterhead? Now suppose हमेशा याद रखना letterhead is for writing. Okay, तो आपका कोई भी color या फिर आपका कोई भी design decision should not be such that it won't allow you to write, because the writing format is going to be over here. Correct? इंसान को लिखने के लिए जगह चाहिए, तो इतने कुछ एलिमेंट्स या फिर इतना कुछ डिजाइनिंग मत डालना कि जो which will not allow the person to do the needful. Okay, so इस पोर्शन में कभी डार्क कलर्स यूज मत करना. If you are going to use a dark black or a dark like full filled in color, it is going to become very difficult for a regular person to use, because see, firstly the person will have to use a white pen over a black thing, which is not easily available in most of the places. हम यहाँ पे like whichever space you are living in, कौन से colors के inks use करते, usually black and blue, so that won't be feasible for that person to use. Whenever you are printing, the person will always have to write in a white ink. Okay, so keep all these things also in mind ki it should be easier for the person who is using it to do. And who are going to be these people? They are not going to be from designing backgrounds.
तो आपका कुछ इलस्ट्रेटर फाइल लेकर उसमें वो टाइप नहीं करने वाले, दे हैव टू डू इट इन वर्ड, दे बिकॉज दीज विल बी मोर यू नो, जैसे आपके प्यून्स होते हैं या फिर आपके एचआरस होते हैं या तो फिर आपके ऑल द मैनेजमेंट टीम जो होती है वो यूज करते हैं, विच आर नॉट डिजाइन साउंड. सो डिजाइनिंग करते टाइम ऑलवेज रिमेंबर दैट हाउ विच पीपल आर गोइंग टू यूज इट एंड यू मेक देयर वर्क easier for them and not complicate their work. Okay. Yes. एंड जो हमने इधर स्पेसिफाई किया है, आप कोई भी स्टाइल, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो आपका लोगो. देन इफ यू वांट यू कैन ऐड इन स्मॉलर डिजाइन एलिमेंट्स लाइक जस्ट अ लाइन or maybe a wave pattern or any of the patterns which you have created into these areas. तो आपका यहाँ पे लोगो, तो यहाँ पे अगर आपको फोन नंबर एंड एवरीथिंग ऐड करना है, so you can go ahead and add it over here. Address. Otherwise you can go ahead and आपके एंड ऑफ द पेज पे आपका ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस, फोन नंबर, ये सब डिटेल्स एक लाइन में या फिर 2 लाइन में बाइफिकेट करके दे सकते हो. ओके. आपको डिजाइन ही करना है, यू कैन गो अहेड एंड डिजाइन इन दीज पोर्शंस. ओके. और हमेशा याद रखना कि आप जब डिजाइन कर रहे हो तो जस्ट टेक अनदर कलर ओवर हियर. तो आप एटलीस्ट 0.5 स्पेस हर जगह से छोड़ के ही डिजाइन करो, या तो फिर आप राइटिंग एरिया उतना, मतलब योर राइटिंग पार्ट जो इतना वेबसाइट और ईमेल आईडी और ये लोगो प्लेसमेंट, ये सब उस एरिया के अंदर आना चाहिए, बिकॉज दिस गोइंग टू बी प्रिंटेड. अगर इधर थोड़ा 19-20 हो गया तो आपका 19-20 मतलब वाइल कटिंग अगर थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो आपका जो भी डिटेल्स है वही चला जाएगा. तो फोन नंबर में से एक नंबर ही कट हो जाएगा, ईमेल आईडी में से एक लेटर ही कट हो जाएगा. सो दैट वी डू नॉट वांट. सो ऑलवेज 0.5 सेंटीमीटर स्पेस हमेशा साइड से छोड़ना. I'm not saying draw a border or anything over that, but while doing it, just leave that much amount of space.